Hello everyone, welcome to my YouTube channel Cognitive Coders. So today in this video we will learn how to use two JSON function. Okay, so two JSON function basically पूरा opposite तरह का काम करता है from JSON function का. Whoever have watched my earlier video, the from JSON function, they can easily understand the two JSON function. It's basically the opposite funda of the from JSON function. Okay. तो जो लोग मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा, लास्ट दोनों वीडियो जो ये फॉर्मेशन फंक्शन का जो है, फ्रॉम यूजिंग फॉर्मेशन फंक्शन टू कन्वर्ट द जेसन स्ट्रिंग टू मैप टाइप. ओके, और टू कन्वर्ट द जेसन स्ट्रिंग टू स्ट्रक्ट टाइप, ये दोनों वीडियो को देख लीजिए. तो बेसिकली बेसिक फंडा समझ में आ जाएगा. देन यू कैन क्लियरली प्रोसीड टू द टू जेसन फंक्शन. ओके, तो बेसिकली टू जेसन फंक्शन क्या करता है? टू जेसन फंक्शन करता है कि मैप टाइप कॉलम को और एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्ट टाइप कॉलम को जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है. Whatever it used to do in from JSON function, it is doing the opposite thing. Okay, so let's go to the workspace. Okay, so I have already created already written the code here for creating the data frame as we used to do. We have already seen in our earlier videos also how to create the data frame. Data frame is created. Okay, you can see, if we see the data frame property column, it's in map type. Okay. So now if we want to convert this property column to a JSON string type, in that case we need to use two JSON. Okay. So here I will only show you how to convert the map type to JSON string. You people in your home just practice it how to convert it from a struct type to JSON string. Okay. So if you guys stuck in anywhere or you are facing any problem, कोई भी issues face करते हो तो मेरे को वीडियो कमेंट में बता देना. मैं फिर से एक वीडियो डाल दूंगा और कमेंट पे आंसर कर दूंगा कि कैसे स्ट्रक्ट टाइप के लिए भी जेसन स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट होता है यूजिंग जेसन. ठीक है, पहले ट्राई करके देखो. इफ यू गाइस विल एनी काइंड ऑफ इशू ऑफ creating struct type column, first go through this video, this number 40 video. Okay, you will get understand. Okay, so let's come to this. Okay, first तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये टू जेसन फंक्शन को इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम PySpark डॉट SQL डॉट फंक्शन. इंपोर्ट टू JSON. Okay. Now what we'll do? Now we'll create one new data frame here. So create dot quick column चेंज करेंगे, या फिर नया कॉलम क्रिएट करेंगे. कॉलम का नाम लेंगे prop. Okay, properties का शॉर्ट फॉर्म prop. Then we will use the JSON here and we'll pass the कॉलम रेफरेंस. जो भी कॉलम को हम लोग चेंज करना चाहते हैं वो वाला कॉलम का रेफरेंस यहाँ पे डाल दें. हो जाएगा. ओके, मैं प्रॉपर्टीज कॉलम को कॉलम को मैप टाइप से जेसन टाइप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ जेसन स्ट्रिंग में. तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज कॉलम का रेफरेंस डाल दिया. ठीक है, अभी इसको प्रिंट भी करेंगे हम लोग, मतलब शो करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे करते एक कॉन्टैक्ट को फॉल्स कर देते, नहीं तो पूरा दिखाई नहीं देगा. ठीक है, तो क्लियर करते यहाँ पे
ये कैसे आ गए, स्ट्रिंग में आ गए। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करके एक यहाँ पे इसका प्रॉपर्टीज देखूंगा, यहाँ पे ये तो प्रॉप जो है, प्रॉप स्ट्रिंग में आ गया। प्रॉपर्टीज मैप में ही है, पर यहाँ पे मैंने न्यू न्यू कॉलम लिया है प्रॉप बोल के, जो स्ट्रिंग में ये सिस्टम। So I think you have understood the concept. Okay, this is the basic funda of how to convert any kind of column, any type of column to JSON string type. Okay, I think you have understood the concept. If you like my video, please do like, share, and subscribe my YouTube channel, Cognitive Coders. You guys support is very much required for us to grow our channel. Okay, and to come with new videos and new data engineering related new feature videos. Okay, thank you for watching my videos. Bye.